Good morning, my dear student. This is Preeti Mukherjee. Welcome to the online class of Shriram Public School. So today we are going to discuss the another half of this chapter, chapter 16, and the name of this chapter is Our History. So today's topic is Delhi Sultanate. It will be a very interesting topic today. So let's start. Medieval period. The topic start with the medieval period. Actually, our history is divided. Our history means this history subject is divided into three parts. One is ancient period. After that, the medieval period. Then it comes to the modern period. The ancient period we have already discussed. In ancient period, we have seen in this chapter that, or we have learned in this chapter that Indus Valley civilizations, that after that the Aryans, about the Aryans, then Mahajanapads, after that Alexander the Great, then we have discussed on the Mauryan Empire, then the Gupta's empires also. All these things are included in the ancient period. So let's concentrate on the medieval period. After the ancient period, the medieval period has come. So in the medieval period, we can see that the Arabia and the Persia became more powerful. Arabia and the Persia, the rulers of the Arabia and the Persia became more powerful. And they attacked India several times. Several times they attacked India. Why? Because India is a very rich country. So that's why actually that time everyone tried to attack the India, and uh, try to rule over the India. Why? Because India was a very rich country. हम लोग जानते हैं ना कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे. क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ था, बहुत सारा सोना, बहुत सारा वेल्थ था. दैट्स वाई सब चाहते थे कि यहाँ पर आके इंडिया को आकर अटैक करेंगे और बहुत बहुत सारी चीज हम लूट कर चले जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पर रूल करेंगे, राज करेंगे. सब चाहते थे इंडिया के ऊपर रूल करना, बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री. उनमें से among them that Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori, these two names was so important or so famous. Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori raided the country and carried away large amount of wealth. ये दोनों महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी भारत में आकर अटैक किया और बहुत सारा संपत्ति लूट कर चले गए. And you will be shocked to know that this person means that Mahmud of Ghazni attacked India several times. I mean, there's 17 times. 17 times he attacked on India, and he carried away large amount of wealth. इंडिया के ऊपर महमूद ऑफ गजनी जो था, महमूद ऑफ गजनी बोलकर जो थे, वो इंडिया के ऊपर 17 बार उन्होंने अटैक किया और बहुत सारा वेल्थ लूट कर चले गए. फिर भी इंडिया के पास, अभी भी इंडिया के पास इतना कुछ है, तो फिर सोचो अगर अटैक नहीं होता, इतनी बार इंडिया के ऊपर अगर अटैक नहीं होता, तो कितना सारा हम लोगों के पास, कितना कुछ हम लोगों के पास होते. Okay, then comes to the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate is a start with a dynasty named the Slave Dynasty. What is the meaning of the slave? Slave means दास. जो नौकर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं slave. In English, it is known as slave.
तो नौकर का डायनेस्टी, दास डायनेस्टी, यस। मोहम्मद घोरी का जो दास था, जो नौकर था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन आइबक, एंड ही became the ruler of this dynasty. He was the founder of the slave dynasty. This Kutubuddin Aibak was the uh, slave of the Muhammad Ghori. He was a slave of the Muhammad Ghori, and he formed this dynasty. When this dynasty, when 1206, okay. Now this Aibak, he founded the Delhi Sultanate. He was followed by the Iltutmish, Razia Sultana, and Balman. आइबक के बाद आई मीन दिस कुतुबुद्दीन आइबक के बाद सिंहासन में बैठे इल्तुतमिश. ही वाज द सन इन लॉ ऑफ द कुतुबुद्दीन आइबक, मींस इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन आइबक का दामाद थे. देन राजिया सुल्ताना सिंहासन में बैठे. राजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वुमन हु केम टू द थ्रोन. जो राजिया सुल्ताना पहला जो महिला था जो सिंहासन में बैठे थे, महिला था वो. एंड आफ्टर दैट द बलवन वाज द सो पावरफुल रूलर that time. And the first two ruler made the famous Qutub Minar, which is located in Mehruli, New Delhi. In New Delhi, we will find the Qutub Minar. Whenever you go to the New Delhi, you will visit this Qutub Minar. This Qutub Minar was made by the कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश ऑल्सो. वाई दोनों मिलकर क्यों बनाए थे? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन उसको खत्म किया था उसका दामाद ने. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सिंहासन में चढ़े थे वो था उसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश. वो कुतुब मीनार को मतलब कंप्लीट किया था. So Kutubuddin Aibak started to make this, and after that his son-in-law, that Iltutmish, completed this completed this Qutub Minar, and it is situated in the Mehruli. ये कहाँ पर है? In New Delhi. Okay. So when the Delhi Sultanate declined, तो इसके बाद जब डिक्लाइन मतलब खत्म हो गया, ध्वंस हो गया. When the Delhi Sultanate declined, North India was divided into many small kingdoms. After this Sultanate declined, the North India divided into very small kingdoms, and then the Mughals invaded India under the leadership of the Zahiruddin Muhammad Babur. We know the Babur. His full name is Zahiruddin Muhammad Babur. When the North India divided into some parts, मतलब North India जब छोटे छोटे साम्राज्य में भाग हो गया था, small kingdoms में भाग हो गया था, तब ये मुगल आकर अटैक किया और मुगल साम्राज्य चालू किया, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. बाबर बोलकर हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. When in the 1526 the first battle of Panipat took place and Babur defeated the last sultan of the India, Ibrahim Lodi, the Mughals ruled over a vast region from Kabul to Assam and from Kashmir to Tanjore. Tanjore means that Tamil Nadu. मीन्स जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब छोटे छोटे नॉर्थ इंडिया जब छोटे छोटे साम्राज्य में भाग हो गया था, डिवाइडेड हो गया था, तब बाबर आए. बाबर आकर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट राजा था, लास्ट राजा का नाम था इब्राहिम लोदी. लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोदी. यू हैव टू रिमेम्बर इट दैट द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत नेम्ड Ibrahim Lodi. Babur defeated this Ibrahim Lodi. In which battle? The Battle of Panipat.
when 1526। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ that बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी कौन थे? जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर थे। उन्होंने हरा दिया। कौन से युद्ध में हरा दिया? पानीपत में, पानीपत की युद्ध में। पानीपत मतलब फास्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला वाला जो है फास्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसको हरा दिया। ये फास्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और मुगल्स रूल्ड ओवर द वास्ट रीजन, बहुत बड़ा जगह पर उन्होंने मतलब रूल किया था। कहां से लेकर कहां तक? फ्रॉम काबुल टू आसाम, काबुल से लेकर आसाम तक, एंड फ्रॉम कश्मीर से लेकर तंजौर तक, मीन्स द तमिलनाडु तक। Okay, I hope you can understand that whatever I told you. This is very interesting topic. The Delhi Sultanate, and or that slave dynasty. When the medieval period started, then the Persian Arabia became more powerful. They attacked India several times, and what I have told you that the Mahmud of Ghazni attacked on India, attacked on India 17 times. 17 times he attacked and carried a large amount of wealth. After that, the slave dynasty formed, and Qutbuddin Aibak was the founder of the slave dynasty. Why this dynasty called the slave? Because that Qutbuddin Aibak was the slave of the Muhammad Ghur. He was a slave of the Muhammad Ghur, and after that he formed this dynasty. That's why this dynasty is also known as a slave dynasty. Then after that क्या हुआ? He made the Qutub Minar, but he not able to complete this Qutub Minar. After that, his son-in-law, that Iltutmish, he completed this. And Ibrahim Lodi was the last ruler of the Delhi Sultanate, and Zahiruddin Muhammad Babur defeated to this ruler, means that Ibrahim Lodi won in the battle of the Panipat, first battle of the Panipat, when 1526, in 1526. This is the topic, and we will discuss the Mughal Empire in the next video. This empire, Mughal Empire में हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में, अकबर the Great, and we will discuss so many things, and we will discuss some story also that you will not find in your textbook. हम लोग कुछ story बोलेंगे, discuss भी करेंगे story मुगल पीरियड में क्या था क्या नहीं था। तो it will be very interesting. That story you will not find in your textbook. वो जो हम जो story बताएंगे वो story तुम लोगों को इस textbook में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम स्टोरी बताते जाएंगे ताकि तुम लोगों को ये हिस्ट्री पसंद आए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और अकबर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो नो मोर टुडे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।